JHC. So two officials out in the middle, Aniket and Nilesh. One is the most experienced and Aniket is the upcoming budding but has many matches under his belt. Very good judge, I must say, on the cricketing field. Meanwhile, pairing up with Nilesh Naik as Nilesh takes the guard at the bowling end as a main umpire, Manjit the bowler. Here we go with the umpire signal as the stage is set for the next match in this tournament. Winning the toss, Januman decides to bowl first. First delivery goes away outside the off-stump. Stretch of both the arms by the umpire, signaling that it is a wide delivery. Manjit starts with a wide, and that's opens the account of JJC. Switch hit is in play. Ball is racing towards the point boundary, but the fielder patrolling the fence gathers the ball. Another single. Single from the bat of Akshay, as well as single properly for JJC, taking the score to 2. Requesting the fielders to kindly throw the ball into the hands of the players, as a lot many techniques are being used to make the ball little darker. Meanwhile, another ball way outside the off stump. Wide is the signal. Second extra from the opening over, taking the total to 3, and that brings the left-handed batsman onto the striking end, Vikrant. Right into the zone, but not able to do the proper connection. Mostly these light ball games are known for very huge score. But here the dew factor also is playing the trick, as ball skids on as it is getting wet and it rolls onto the surface. Meanwhile, Manjit gaining some momentum. Akshay on the striking end. Fumbles onto his run-up mark, decides not to deliver. That's dead ball is the signal from the umpire. Another good pitch delivery straight into the block hole. No room whatsoever for the batsman. Plays it safely to save his wicket, and that's a dot ball. So next delivery has been flicked towards the square leg for a single to bring Vikrant on the striking end. Meanwhile, call is going out for amazing cricketers Asolna and Sakyahari to kindly come for toss. Captain of Amazing and captain of Sakyahari to kindly come for toss. Meanwhile, first over is on Aniket to Vikrant. I beg your pardon, just number 34, Manjit is the bowler. Meanwhile, chance of run out, and what a lovely application of mind. Knew that Akshay is way outside the crease. In spite of throwing the bowler onto his follow-through, runs back to the bowling side, dislodges the bails, and the first wicket goes down in the first over. Akshay departs, walking back to the pavilion. New man in is Pritham, will be at the non-striker's end as Vikrant is on striking end. Courtesy a shrewd run out by Manjit onto his follow-through to send Akshay back to the pavilion. Still, first over is on. Match is going to be played off 4 overs. 5 for the loss of 1 wicket. Ball capped a little low after being hit on the deck. Travels to the third man, missing the keeper. Meanwhile, buys is the signal from the umpire, and that buy takes the total to 6. There's a completion of 6 legal deliveries in the first over. 6 for the loss of 1 wicket.
So a single on the last delivery brings Vikrant back on the striking end as there's a change in over. Sunaj, Sunaj, Sunaj. Aniket now, just number 71 comes to deliver in the second over of the inning. Right arm over the stumps. Vikrant misses the ball that is pitched slightly away from him towards the leg side. Stretch of arms by junior umpire Aniket, signaling to add extra into the account of JJC. And that extra makes the total to run with 2 runs. Score moves to 8. Pritham on the striking end. Pritham strikes very hard. Sonoj, lovely effort to stop the ball and definitely stops. 5 runs for his side. Wonderful effort by Sonoj. Very shrewd cricketer, very alert. Don't go onto his physique, he's very fit. And that single takes the total to 9. Vikrant connects. What a lovely timing. Ball is been hit miles in the orbit. Finally, the ball landed safely out of the boundary rope to bring 6 runs onto the board. That sixer takes the total to 15. 15 for the loss of one wicket. Finally, there's some good shots have been offered by Vikrant. Flicks the ball towards the fine leg as the field is a little heavy. Courtesy lot of dive on the field. Ball finds it difficult to travel along the carpet. Let's see what is going to be plan of the batting side. As well as after being hit, still a good short reply from Aniket, giving a single. Pritham tries his very best, hits the ball along the carpet just to get a single. With a single, score moves to 17 for the loss of 1 wicket. And the in-form batsman looking to be in form after hitting a 6. Vikrant on the striking end. Another swing, not able to connect the ball at the sweetest part of the bat. Ball taking the leading edge of the bat, travels to the short fine leg fielder. Another single, score moves to 18. Second over in progress. And meanwhile, Pritham is asking for another willow as he's finding it difficult to maintain the balance of the willow. That's why he's not able to hit the ball properly. Finally, he gets the proper willow in his hand. Let's see whether Pritham can strike at least for a maximum out of this over, or Aniket is going to make it difficult for the batsman. Change of the willow doesn't work for Pritham. Aniket concludes the second over with a dot ball. After completion of 2, score is 18 for the loss of 1 wicket. And now definitely there is a conversation, short conversation going on between the wicketkeeper and the bowler. So now another good bowler, a shrewd bowler has been introduced by the captain of Januman. It's none other than Jagannath. Nickname that has written on his back is Jai. Jersey number 26. Let's see how he is about to handle the proceeding. Left arm over the stumps. Short pitch delivery, and Vikrant, who was silent for a while, even in the second over, is doing the talking with the bat. A maximum over the mid wicket. No chance for the players rather than watching the ball sailing above the head. That's a biggie. Sixer taking the total to 24 for the loss of 1 wicket. Jai has been welcomed at the very ground of Anandwadi with a bigger and a bigger 6. So now the ball has been dipped into the chalk powder so that it is easy to sight, and the ball takes a grip. Meanwhile, Jai to deliver. Short pitch delivery. There's a strike. Ball races quickly across the fence on the carpet. There's a boundary. 10 runs from 2 deliveries that are being bowled by Jagannath alias Jai.
And again, the ball is going to be dipped into the chalk powder so that the wetness of the ball is being soaked by chalk powder and the ball travels quite comfortably. Meanwhile, Vikrant gaining the momentum in the third over. Jagannath with the ball left arm over the stumps. Another strike, but not able to connect. Ball onto the legs. Quick delivery making it difficult for the batsman. Meanwhile, a short reply in form of a dot ball. Oh my dear, consecutive two good deliveries after those boundaries, a sixer and a four. A single in form of leg by, taken by Vikrant to being Pritham on the striking end as he was not able to hit two deliveries. Meanwhile, Pritham, it's time for Pritham to join the momentum. Again a good delivery right in the block wall, slightly outside the off stump. Requesting the keeper who is standing close to the wicket, kindly stay couple of yards away from the stumps because safety is the main issue. Lot many incidents have happened. मातशे एक दोन पावलां विकेटीच्या फाटल्यानूच रावचो. And a good delivery, but down the leg stump. A wide plus a single, 2 runs to be added to the total. With this couple of runs, a score moves to 32. Appeal is going on by the fielders and even guided by the fellow partner. So wide has been cancelled. That is the legal delivery. So only 1 run to the total. And that concludes over number 3. After completion of 3, score is 31 for the loss of 1 wicket. Requesting the captain to make it fast of the fielding side. Let's see who is going to be the 4th bowler. And undoubtedly, jersey number 07 on his back. A good all-rounder of Jai Hanuman is about to deliver the 4th over. Vikrant on the striking end, and we can see a couple of fielders, a pack of fielders shifting from one place to the other as the left-handed batsman on the striking end. Sanoj decides to come round the stumps. Short pitch delivery. Again Sanoj has been welcomed with a sixer. Sixer taking the total to 37. Ball has been brought back onto the ground. Again the ball will be dipped into the chalk powder. Sanoj to bowl the second delivery of the penalty over. Another handsome strike. Consecutive sixes from the bat of Vikrant. Finally getting his form into the final over of the inning. Second six taking the total to 43. Third legal delivery of the final over of the inning. Vikrant. And the result is going to be little different as ball goes along the carpet. Swinging of arms by the umpire signaling 4 runs to be added to the total. 4 runs, score moves to 47. 47 for the loss of 1 wicket. So far 2 sixes and a boundary. Short pitch delivery, comfortable strike, and the ball disappears. Again across the fence. Third 6 of the over. 4 legal deliveries and 22 runs already from this over. Score racing to 53. 22 runs from the first 4 deliveries. 2 more deliveries are about to be bowled. Vikrant on the roll. Swings the bat very hard. But we have to wait for umpire signal. Maybe ball have touched the feet of the keeper. Rolls onto the stump. That's why the LED lights were flashed. Meanwhile, wide is the signal from the umpire. Score moves to 54. 2 legal deliveries to go. Another short pitch delivery down the leg stump. Good keeping from the keeper, but result is going to be the same. Wide delivery. 1 more run in form of extra, taking the total to 55. That is 55. So after the much needed requirements,
Again consecutive third wide stretch of arms confirms it. Third wide bowled by Sanoj, feeling the pressure, feeling the heat that has been done by Vikrant. Two legal delivers to be bowled. Another wide-ish off some delivery. We have to wait for by signal. Meanwhile, a single has been taken. Throw at the non-strikers and missed by Sanoj. And 2 runs to be added. Courtesy 1 more wide. Total 3 runs to the total. With his 3 runs, score moves to 59. Still 2 legal deliveries to come. Again, outside the off stump. Consecutive 5th wide bowled by Sanoj. The pressure has been felt by Sanoj as if he tries to deliver, then definitely the Vikrant is not going to spare. So Sanoj onto the striking end, bowling the delivery, strikes the ball towards the keeper. Meanwhile, he strikes a dot ball, flashing the LED after the ball hitting the legs of the keeper onto the stumps. Vikrant gives a dot ball after those wide deliveries. Last delivery of the inning. Vikrant with the bat, Sanoj delivering for the final time. Full toss delivery missed by the batsman. And Sanoj concludes with a dot ball. So JJC have scored 59 runs, 60 runs for the loss of 1 wicket, and the target in front of Jai Hanuman is of 61 runs. So requesting amazing cricketers Asalna and Sakahari to take the toss. So batting first, JJC has managed to score 60 runs, out of which 41 runs have been scored by Vikrant alone. Target is of 61 runs in front of Jai Hanuman. Let's see whether the batsman of Jai Hanuman can achieve the target, or the bowlers are going to make the plot difficult for Jai Hanuman. So meanwhile, 2 openers are gradually marching to take their positions. And as the night progresses, more and more people, after enjoying their dinner, will be joining on the ground, as well as the viewers are enjoying from their houses. Courtesy, the matches are live, and the live cast that is telecasting the matches, Goa Livecast proprietor Nikhil Dangi is with us in the commentary box, who is telecasting these matches live. Akshay, the bowler. Sanoj strikes the ball very hard, and that's the first sixer. Meanwhile, it's time for me to take a break. Handing over the mic to my fellow commentator after this over. Till then, let him enjoy his dinner and take some rest. Akshay bowling the first over. First ball goes out of the park. Another similar attempt, but no proper connection. Makes the ball to travel to the keeper. Sixer followed by the dot ball. Non-striker, Sanoj. Non-striker. Meanwhile, wonderful strike, but straight to Utkarsh. Sanoj departs.
Requesting the 12th man to remain in the commentary box of Jai Hanuman, as we are finding it difficult to name your players. Twelfth man of Jai Hanuman. सो हांगा जमिल्ल्यांक सगल्यांक एक कळवणी, सकल कॅन्टीन अवेलेबल आसा आनी थंय तुमकां रिफ्रेशमेंट रेडी आसतलें. गरम गरम ऑमलेट पाव आनी खुबशे पदार्थ हांगा कॅन्टीनान अवेलेबल आसात. जर भूक लागल्या जाल्यार अवश्य कॅन्टीनान विजीट करचें. Meanwhile, Akshay delivering right above the stumps. Lovely strike towards the cover. And we are not knowing the names of the players. जर तुमच्या प्लेयरांची नांवां हांगा पावोंक ना जाल्यार इंडिविज्युअल प्रायजीस प्लेयरांक दिवचे नात अशें ऑर्गनायझरांनी आमकां कळयलां. Prashant on the non-striker's end. Meanwhile, another hit, chance of a catch. Utkarsh doesn't miss. And unknown player goes back to the pavilion. So we are not going to call any names. It's the duty of the 12th man to come and assist the scorer with the names, as the organizers are very strict with the discipline of the game. So Akshay, looking very confident, manages to take 2 wickets, did not score much for his side, but a decent line and length, and he takes. Now Prashant on the striking end and Manjit at the non-striker's end. Short pitch delivery slightly outside the off stump. That's the end of the very good first over. Successful over for JJC, bowled by Akshay. Has given 7 runs and taken 2 wickets. And it's time for me to take a break. Handing over the mic to Krishna Devji to give the further updates. इस बार काफी ऊपर कर दी. नो बॉल का इशारा मैदान पर. नो पर रन मिलेंगे लगभग इस वक्त मैदान पर. और फ्री हिट का ऊपर से मौका भी मैदान में बिल्कुल अच्छा माहौल है. देखिए इस वक्त फ्री हिट के मौके के लिए आप तैयार रहिए. एक बेहतरीन मुकाबला ये. 9 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में. और फ्री हिट के मौके पर गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला गया. पहला रन बहुत तेज निकला और इस 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची. टीम का कुल स्कोर 10 पर पहुंचा. एक खूबसूरत माहौल रात का समय. लगभग इस अच्छे मैचेस आपको दिख रहे. ओस बिल्कुल गिर रही मैदान पर. और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट हवा में कुछ पल के लिए, लेकिन मिड विकेट का खिलाड़ी जर्सी नंबर 12 पहनकर वापस जो तक स्क्रीन पर निकलवाता. 1 रन निकलता हुआ. इक्का दुक्का बीच बीच में एक बड़ा शॉट, एक फ्री हिट का मौका, ये कुछ इस वक्त मैदान पर आपको दिखाई दे रहा है मैदान में. ओ फुल टॉस कैन, खराब कैन, स्कोर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए. इस छक्के के साथ टीम ने रन गति पहुंची 17 पर इस वक्त मैच में. 17, जबकि कोई नुकसान नहीं अभी तक खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का इस मैच के दरमियान. 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर. ये चक्रीय मैदान पर यूट्यूब के माध्यम से आपको मुकाबले किए जा रहे हैं. गोवा लाइव क्लास के माध्यम से ये मुकाबले आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. ओह, ऑफ ड्राइव का एक खूबसूरत शॉट, 6 रन. दामे बल्लेबाज का जो कि प्रशांत के बल्ले से निकला एक दूसरा छक्का. बैक टू बैक 2 छक्के मैदान पर. रन गति अब बहुत तेज बनती हुई. 23 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में. खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का इस मैच के दरमियान. वापस खेल, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट हवा में और एक खूबसूरत फील्डिंग. शायद यहां से आसान नहीं होगा बताना क्या वहां पर हुआ, लेकिन मैं तो कहूंगा आप यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं रिप्ले में.
किस तरह से इस गेंद को रोका गया, एक बेहतरीन फील्डिंग लगभग 5 रन बचाते हुए। अब देखिए किस तरह से, देखिए हवा में गेंद है, खिलाड़ी पहुंच गए, देखिए हाथ से उनके लगी गेंद और दूसरे खिलाड़ी को छूने से पहले शायद गेंद निकली है। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बढ़िया। और समाप्त हुआ दूसरा 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर 24 पर। चार ओवर का मुकाबला, अब 4 ओवर में लगभग 60-65 ये भी आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर, क्योंकि जिस तरह से ये माहौल चल रहा है मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल, और साथ साथ गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, विक्रांत मैदान पर मोर्चे पर। ओ आते ही चलिए, स्वागत है आपका विक्रांत 6 रन के लिए। गेंद को हल्का सा ऊपर करेंगे और इस स्तर पर तो मैं तो कहूंगा प्रशांत है सामने से, एक अच्छी बैटिंग, 3 छक्के प्रशांत के बल्ले से निकले मैदान पे अभी तक, जो कि प्रशांत बल्लेबाजी कर रहा अपने निजी 21 रन पर, और टीम का स्कोर 31-30 यह हालत मैदान में। प्रशांत के बल्ले से निकला छक्का, तीसरा इस इनिंग का। ओ शॉट ऑन पुल का शॉट, पुल सक्सेसफुल 6 रन के लिए। 36 यह है टोटल सामने से। क्या बैटिंग मैदान पर, 4 छक्के प्रशांत अपने निजी टोटल में लगाता हुआ अपने निजी को स्कोर पर, और टीम का टोटल 36 मैदान पर, 36 ये सामने से टोटल। ओ हवा में मिस टाइम अगेन, सीधे खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट मैदान पर। 4 छक्के, लगभग 27 रनों की बैटिंग मैदान पर समाप्त हो चुकी है। टीम 36 पर पहुंची, पहले विकेट के बीच की भागीदारी समाप्त मैदान में। वापस नया खिलाड़ी, ओह आते ही बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया, और देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आप मुकाबले देखिए, ओस कितनी गिर रही है, देखिए बरसात की तरह जय भोसले ये ओस गिर रही है, और उसमें भी बल्लेबाजी, लेकिन क्या टाइमिंग है, ये बेमिसाल टाइमिंग 6 रन के लिए। 42 है ये टोटल सामने से मैदान पर। इस ओवर में भी लगे लगभग 2 बड़े शॉट मैदान में। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है, देखिए बिल्कुल आप गेंद को देख सकते हैं, गेंद को आप बिल्कुल जिस तरह से ये सुखा रहना आसान नहीं होता वो। ओ लो फुल टॉस, लेकिन परिणाम हश्र वही मैदान पर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बैक टू बैक दूसरा छक्का इस ओवर का। इस ओवर में लगे 3 छक्के मैदान में, टीम पहुंची है 48 पर। आकाश के बल्ले से निकले, मंजीत के बल्ले से निकले लगभग 2 छक्के इस ओवर में बैक टू बैक मैदान पर। फोर्टी 48 यह हालत है मैदान पर। अंतिम और मैदान में एक युवा गेंदबाज मोर्चे पर है। टीम जानती है कि इनमें काबिलियत बहुत ज्यादा है और ये आखिरी समय पर स्पेल में आखिरी स्पेल कर सकते हैं, मतलब अब अपने निजी कोटे का भी आखिरी स्कोर रहेगा, इनका पहला होगा, लेकिन टीम के लिए भाई ये आखिरी ओवर मैदान पर, और स्लॉक और जर्सी नंबर 18 पहनकर। ओह 48 पर ये शायद गेंद पैड पर लगी है, रनआउट का मौका है, लेकिन चलिए अपने पॉपर के पहली गेंद डॉट निकलती हुई। 19 गेंदों का खेल अभी तक हो चुका है और 19 गेंदों में लगभग 48 है, और जिसमें से कहूं ना तो 7 छक्के मारे इस मैच में। 7 छक्कों के रन 42 हो चुके और सिर्फ 6 रन जो बल्ले से दौड़कर निकले। और फिर से बल्ले पर लगी, हालांकि 1 रन निकलेगा या नहीं निकलेगा देखना पड़ेगा। न्यायपालिका क्या कहेगी मैदान में, अंपायर के बिल्कुल, और देखा गया तो इस वक्त अंपायर लग रहा है कि ये पहुंच चुके आसान से 1 रन मिलता हुआ।
और 1 रन के साथ रन गति मैदान में पहुंची टीम का स्कोर 49 पर। गेंदबाज का नाम है जो कि साहिल जो कि मैदान पर साहिल 4 गेंदे 12 रन। ओहो हो, शायद बड़े शॉट के लिए जाना था मैदान में और शायद यह मौका रन आउट करने का। 3 गेंदों का खेल मैदान में बचा हुआ, अभी भी 10 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे मैदान में। धागा 10 रन अभी भी जिससे पीछे मैदान में। गेंदे बची कितनी है? 3 गेंदे अभी भी इस खेल में बची है। ओ फुल टॉस किया, फुल टॉस, फुल लॉस, 6 रन। समर्थन देखिए कितना बेहतरीन। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ मैदान में और आवश्यकता सिर्फ 4 रन के मैदान पर। लेग स्टंप पर आप हल्का सा भी भटकोगे ना तो परिणाम ये होगा, गेंद को लेग स्टंप पर नहीं डालना है। मंजीत जो कि स्ट्राइक पर है, 2 गेंदों का खेल बचा है। हो उड़ाया 6 रन के लिए। मैच विनिंग शॉट मैदान में। मैन ऑफ द मैच का दावेदार मंजीत रहेगा। 4 छक्के, इन्होंने भी 27 रन बनाए और जो आउट हुए प्रशांत, उन्होंने भी 27 रन बनाए। सिर्फ फर्क इस बात का है ना कि मंजू ने गेंद कितनी खेली है? 8 गेंदों में 27 और प्रशांत कितनी गेंदें खेली है? 9 गेंदों में 27 और नॉट आउट है मंजू, इसलिए प्रशांत जो कि मैन ऑफ द मैच नहीं रहेगा। मंजू जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर बनता हुआ। सख्याहरी और अमेजिंग अस्नोडा, इनके बीच में मुकाबला होगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच सकते हैं। टॉस हो चुका है, अमेजिंग टीम ने क्या सर क्या टॉस अमेजिंग टीम ने जीता। हाँ, अमेजिंग टीम ने पहले टॉस जीता और उन्होंने कहा वो फील्डिंग करना पसंद करेंगे और सखा टीम को कहा कि आप वो बल्लेबाजी कर सकते हैं मैदान में। 4 ओवर का मुकाबला ये। इससे पहले आपने देखा किस तरह से बैटिंग देखने को मिली, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान में। 8 गेंदों पर 27 और 9 गेंदों पर 27 और मैन ऑफ द मैच के दावेदार मंजीत जो कि मौजूद मैदान पर। बिल्कुल इस मैच के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ जय भोसले जो कि